Hi friends, today our topic is India defense industry and future. So friends, whatever we have seen in the recent Indo-Pak war, a significant changes or role of India in shaping Southeast Asia's geopolitical landscape has been seen. Okay, a landscape changes has been seen in South Asia's. A significant changes has been seen in all the historical conflicts, that is starting from 1947, 1965, 1971 and 1999 कारगिल वार. ठीक है. एक सिग्निफिकेंट चेंजेस हम लोग को देखने मिला इन दिस ऑल वार स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 टू 19. सो ये सिग्निफिकेंट चेंज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द हिस्टोरिकल वार आफ्टर 1947 हैज़ बीन फॉट बाय इंडिया विद द हेल्प ऑफ फॉरेन आर्म्स. लोग वार लड़े हैं आज तक starting from 1947 से in all war. Okay, we have used the foreign arms and ammunitions. Okay, but in recent war India has showcased its indigenous developed weapons. Okay, so in the recent war we have seen lot of बहुत सारा नाम हम लोग सुने हैं, like Arjuna tank, like Pinaka missile, like Tejas light combat aircraft, like Astra air to air missile. Okay, like surface Akash surface to air missile, like Prithvi missile, like BrahMos missile. Okay, these all names we have heard, okay, in the recent war between India and Pakistan. So why I am discussing this? Because all these arms and ammunitions or defense systems are used which are indigenous developed in India. ओके, इंडिजिनियस का मतलब क्या है कि जो वेपन्स इंडिया में डेवलप किया गया है और इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया है. ओके, सो आप देखो अर्जुना टैंक, ठीक है, वी हैव इंडिजिनियसली डेवलप्ड दिस वेपन्स as well as we have used Pinaka missile, we have used Tejas aircraft. All these defense system, whatever I have shown you, all are manufactured in India or made in India. Okay, so this is the significant change has been seen. Okay, so if we see that from 1947 to 1948 war, also known as the first war of Kashmir, was fought soon after the independence, largely with the weapons left over from the British rule. ओके, सेम 1965 वार में क्या हुआ था? 1965 वार में भी वी वर डिपेंडेंट अपन द सोवियत यूनियन वेपन्स. 1971 Indo-Pak war, which led to the liberalization of Bangladesh, where India was failed to showcase indigenous contribution. Okay, these are all headlines, that from 1947 से लेके 1971 तक whatever war we have fought, in all war we have used the foreign arms and ammunitions. But a major transformed has been happened in terms of 1999 war, that is known as Kargil war. वो चेंज क्या था? In Kargil war, that we have developed in 1958, we have developed DRDO, Defense Research Development Organization, which played a very vital role in terms of Kargil war. ठीक है, तो कारगिल वार से ये मुहिम चालू हुआ था कि वी कैनॉट डिपेंड अपॉन द फॉरेन वेपन्स, वी कैनॉट डिपेंड अपॉन द इम्पोर्ट्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज. ओके, वी हैव टू डेवलप आवर ओन वेपन्स इन आवर ओन कंट्री, which will not only safeguard our borders but also it will contribute to our economy. Okay, defense budget को लेके that from last 50 years what was the India's investment in this sector, that is called defense industry. Okay, so if you can see from this picture that from 1998 to 1999, okay, the contribution in the defense sector was 41,200 crore. Okay, all are in rupees shown in this figure. ओके, बट अभी देखिए इन 2018 से 2019 तक ये जो आंकड़ा है इट हैज़ इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली, दैट इज़ 2,82 और 83,000 करोड़. इन्वेस्टमेंट बढ़ा है. सो फ्रॉम दिस फिगर व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट और व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड एज गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड इज स्पेंडिंग in terms of defense sectors. Okay, so now let us understand and dive into deep to the industry कि ये defense industry है क्या. Let us understand this. So with this first segment in the defense industry which is evolved or emerged as the main segment in the defense industry is aerospace. In this segment what are the products available? So in this segment the products are fighter jets, helicopters, UAV and missile. So जो companies which are working with the aerospace segment in the defense sector, these companies are products are majorly fighter jets, helicopters, UAV and missile. Okay, now what is the number 2 segment or sectors as there? The sector is called naval system and
शिप बिल्डिंग। हम लोग रिसेंटली जो इंडो पाक का वार है उसमें ऑलरेडी वी हैव सीन दैट नेवी हैज़ प्लेड ए वेरी वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ द in terms of the missile system, in terms of the attack whatever we have done in the terrorist camps in Pakistan. Okay, so this segment plays a very vital role in terms of defense sector. तो इसमें what are the products are available? इसमें the main products is warships, submarines and petrol vessels. These are the main products available in this segment. Now what is the third segment? The third segment is land system and armored vehicle. तो लैंड सिस्टम एंड आर्मर्ड व्हीकल, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट आता है? इसमें प्रोडक्ट आता है, मेन प्रोडक्ट इज टैंक, ठीक है, मेन प्रोडक्ट इज बैटल टैंक एंड आर्मर्ड व्हीकल। जो लैंड टू लैंड जब वार होता है ना, तब क्या होता है कि वी मेनली गो फॉर द वार विद द टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स। तो दिस इज ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ एनी वार। एंड the number fourth segment we can decide, that is defense electronics and cyber security. ठीक है, so defense electronics is also very important sector in the defense segment. Why it is important? Because you know that last war we have seen that Pakistan has attacked us through lots of drones. Okay, now the war system has changed significantly. पहले लेकिन now the new technologies has evolved, and where the defense electronic systems is very important. Defense electronic segment में हम लोग का क्या आता है? Main product is radar system, surveillance system, okay, communication system or cyber security. Okay, so these are the main products of defense electronics and cyber security segments. Okay, now let us come to the last but not the least important segment, that is space and strategic system. ठीक है, तो इस जो सेगमेंट है इसमें प्रोडक्ट्स क्या आता है? सैटेलाइट्स, डिफेंस जो सैटेलाइट्स होता है वो सैटेलाइट्स, बैलिस्टिक मिसाइल एक्सेट्रा. So these are the segments where the space and strategic segments work, where the products are satellite and ballistic missiles and etc. Now friends, let us dive into deep. ये जो system है starting from aerospace, naval, land system, defense electronics and space, ये जो segments है, इस segment में कौन कौन सा कंपनी काम करता है? तो पहले हम लोग देख लेंगे there are two segments in India's companies, you know that one is PSU and one is private. इसका नाम हम लोग सुने हैं, but what are the products they used to made? So the product, the flagships aerospace company manufacture Tejas like brand. Tejas is a combat aircraft. Dhruv is a helicopter they have made, and Sukhoi Su-30. Sukhoi जो aircraft है, Mirage 2000. Also it developed the advanced medium combat aircraft. Advanced medium combat aircraft. तो इसको बोलता है AMCA, Advanced Medium Radars System. इंडिया मिलिट्री और इंडिया डिफेंस का मिनिमम 85% ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ राडार्स कम फ्रॉम दिस बेल. ओके, तो आप सोच सकते हो हाउ इम्पोर्टेंट इज द कंपनी. एंड नंबर थर्ड सेगमेंट विच वर्क्स इन द नेवल सेगमेंट, दैट इज मस्काव डॉक. ठीक है, ये क्या करता है? इट मेजरली वर्क्स विद द सबमरीन्स एंड द वारशिप्स. तो दीज आर द मेजर थ्री कंपनीज आर अवेलेबल इन द PSU कंपनीज. मैंने क्या बोला? मेजर कंपनीज, दैट मीन्स देर आर लॉट मोर कंपनीज आर अवेलेबल, बट इफ यू टेक द टॉप थ्री कंपनीज, दीज आर द टॉप थ्री कंपनीज विच वर्क्स इन द डिफेंस सेगमेंट in terms of PSU. So now let us come to the segment called private segment. तो private segment में the number one company comes Tata Advanced System, TASL. टाटा एडवांस एरोस्पेस स्पेस में काम करता है. आकाश मिसाइल का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें द TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इज द पार्टनर, मेजर पार्टनर. ओके, द सेकेंड कंपनी इज कम L&T का नाम तो आई थिंक एवरीबडी नोज. तो L&T इज ए बिग कंपनी एंड बिल्ट इंडियाज फास्ट न्यूक्लियर सबमरीन्स कॉल्ड न्यूक सबमरीन्स INS Arihant. Okay, so it generally works in the shipbuilding segment and builds India's fast nuclear submarines. Major contractor of the artillery system like Vajra. ठीक है, आर्टिलरी सिस्टम में भी इसका बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, स्पेशली इन द सेगमेंट ऑफ INS Arihant एज वेल एज like K9 Vajra. Okay, so number third company in this segment is Mahindra Defense. ठीक है, तो महिंद्रा डिफेंस क्या करता है? इट सप्लाइज आर्मर्ड व्हीकल, एग्जांपल एक्स एंड नेवल सिस्टम. ये भी क्या करता है? आर्मर्ड व्हीकल सप्लाई करता है गवर्नमेंट ऑफ और डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सेक्टर को, एज वेल एज इंडियन आर्मी को, एज वेल एज नेवल सिस्टम भी ये इसमें कंट्रीब्यूट करता है. तो दिस आर द मेजर थ्री कंपनीज इन PSU एंड थ्री कंपनीज इन द प्राइवेट सेगमेंट. Okay, so now let us discuss, friend, what are the government's initiative to driving this growth of this defense sector. तो
let us see the government initiative. तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव मेजरली क्या है? यू नो दैट in 2014 India has launched a major projects from the government called Make in India project. Make in India projects in 2014. तो इस प्रोजेक्ट्स के दौरान इसको मैंडेट किया गया है कि 68% ऑफ द कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय 23-24. ओके, तो इसमें क्या क्या कहा गया है कि 68% आपका जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है डिफेंस सेगमेंट्स का आपको इंडिया से खरीदना पर. ठीक है, सो दिस इनिशिएटिव इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव विच इज़ गिविंग द बूस्ट टू द डिफेंस इंडस्ट्री. Number one initiative. Number two initiative is defense corridor. Defense corridors. Government has made a two defense corridor, namely UP, Uttar Pradesh and Tamil Nadu for the defense corridors. That means all the defense industry will get a सस्ता में land उसको मिलेगा. If anybody wants to develop a defense products or want to work with the defense segments, they can easily get a loan or subsidies from the government if they build their industry in these two states like UP and Tamil Nadu. थर्ड जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, दैट इज़ FDI. अभी FDI इन डिफेंस कितना है? FDI डिफेंस में था 49%. ठीक है, 49% जो था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री में होता था. बट नाउ गवर्नमेंट हैज़ डन द इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ दिस 49% टू 74% का FDI अभी पॉसिबल है डिफेंस सेक्टर में. That means if any country wants to invest in India or any foreign direct investment want to come to India, so their threshold limit has also increased to 74%. Earlier it was 49%. Okay, so these are the initiative is driving the defense industry. So now what is the road? मैं पहले ही बोला था कि डिफेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट का क्या मतलब है. इट इज़ नॉट ओनली सिक्योरिंग आवर बॉर्डर्स बट ऑल्सो इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू आवर इकोनॉमी. तो अभी का जो रिसेंटली एक्सपोर्ट है फ्रॉम द डिफेंस इंडस्ट्री टू द अदर कंट्रीज इज़ ओनली $1.9 बिलियन. ठीक है, इन 2022-23. बट नाउ गवर्नमेंट हैज़ एम टू अचीव $5 बिलियन बाय 2025. तो आप देखो पहले 2023 तक आफ्टर अचीवमेंट ऑफ द सेम नाउ गवर्नमेंट इज टेकिंग द इनिशिएटिव टू अचीव 5 बिलियन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री. तो इंडिया का अगर एक्सपोर्ट डबल हो जाएगा फ्रॉम 1.9 to $5 बिलियन, तो वो किसको अफेक्ट करेगा? इट विल अफेक्ट आवर इकोनॉमी, इट विल कंट्रीब्यूट टू आवर इकोनॉमी इटसेल्फ. ठीक है, सो दिस इज द रोड अहेड फॉर द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री. नाउ कंक्लूजन में द कंटिन्यूड पॉलिसी सपोर्ट, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है वो अगर ऐसे ही सपोर्ट करता रहेगा डिफेंस सेक्टर्स को, एक्सपोर्टर बाय 2030. ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव और इंडिया इज एमिंग टू अचीव 2030. ठीक है, टू बी द टॉप 10 पोजीशन, टू एक्वायर द टॉप 10 पोजीशन इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एक्सपोर्टर. सो इफ इट अचीव्ड, ओके, अगर ये अचीव हो जाता है द बॉर्डर्स ऑफ आवर कंट्री, बट ऑल्सो इट विल बूस्ट अप द इकोनॉमी फॉर आवर कंट्री and it will contribute to the economic growth of our country. So with this friends, let us close the topic, and in the coming videos we will come up with a lot of this kind of topic which can not only boost up your knowledge but also will help you to take the financial decision better. Thank you all.